The chilling new audio files. जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट, ठीक है? गुजारिश है ये आपसे, आज मौका है। Planned attack to kill at least 20 in the temple. 100-200 से आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से, कम से कम जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में, कहा 10-20 ने टपका था। Haryana government probes the chilling new audio tapes. Apparently हमें लगता है कि किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड जरूर किया है। Stones, petrol bombs, mob launched a targeted attack on the temple. ये देखो भाई फायर। New riots, a planned conspiracy. The chilling new audio tapes. That's our top focus on India First. The voice in that audio clip is spine-chilling. With clinical precision, the voice calls for targeting of devotees at the Shringar Shiv temple. The voice on the audio tape calls for circulating the message in multiple WhatsApp groups to ensure it spreads far and wide, all the way to Saudi Arabia. Police are now probing the audio message, the WhatsApp groups, and the targeting of the Shringar Shiv temple 45 kilometers away from Noor. Exclusive details on India First. I'm Gaurav Sawant as always. Let's get started with the headlines at 10. Voting underway in Rajya Sabha. Contentious Delhi Services Bill will give almost complete powers to the centre to decide on transfers, postings of bureaucrats. Stage set for India versus NDA clash in Parliament. The debate on no confidence motion brought by the opposition against the Narendra Modi government begins tomorrow. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman to lead the BJP charge. Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored after Lok Sabha Secretariat issues notice. Grand welcome for the Congress Party MP in Parliament. BJP claims a China link to Congress after New York Times report says news portal NewsClick was pushing Beijing's agenda. NewsClick calls China funding allegations misleading. Corruption charge on the Siddaramaiah Sarkar. Karnataka governor raises graft charges against state agriculture minister. The minister says the allegations are baseless and false. There is a rising clamor in Haryana to implement the Yogi model of governance even in Haryana. The Vishwa Hindu Parishad in Haryana wants Yogi Adityanath as the Chief Minister of Haryana, or at least the implementation of Yogi Adityanath's policies like in Uttar Pradesh to ensure zero communal clashes and the targeting of Hindus in India. At a Mahapanchayat that was organized in Gurugram, several sarpanches wanted Manohar Lal Khattar to step down as Chief Minister. They claimed he failed to provide security to Hindus to the temple procession, and that is where Yogi Adityanath's bulldozer politics is what is required. Bulldozer policies are required. Let's listen in to voices from ground before I get you much more on an India Today special investigation into the new clashes. इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा।
The chilling Mewat audio tape, the new audio tape that exposes planned attack on devotees at the Shringar Shiv temple 45 kilometers away from Nu. An audio tape where the speaker taunts. Before I get you that story, big story on India Today. Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha. Government had the numbers, government had support of several parties. The government had absolute numbers in Lok Sabha, but these are images from Rajya Sabha. Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha. Motion moved. There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the registration of births and deaths amendment 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Dr. John Britas, you are moving the amendment. moving, sir. You are moving the amendment? Moving. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. Members. श्रीमती सुलता देव प्लीज. माननीय उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं. मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ. क्योंकि अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर. इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था, वो कानून का अभी बदलने का वक्त आ गया है. क्योंकि हम लोग सब देखे हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण के. क्योंकि मैं खुद एक ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि अगर जन्म और मृत्यु के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है तभी कितना मुश्किल होता है. अगर छोटी बच्ची होती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट सभी जगह दिया जाता है, जैसे स्कूल हो कहीं पर हो, मगर बर्थ सर्टिफिकेट को निकालने के लिए ये सब भी मानेंगे कि हमारे जुतियां घिस जाती है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक निकालने के लिए हम लोग जब इधर उधर उधर भागते रहते होते हैं, हमारे जुतियां घिस जाती है. और वैसे ही ठीक अगर हम लोग डेथ रजिस्ट्रेशन मृत्यु का भी सर्टिफिकेट निकालना चाहे तो भी उतना ही प्रॉब्लम होता है. क्योंकि ये सारे जो है ये फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मगर जबकि अब डिजिटल इंडिया की बात हो रहा है तो ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जन्म और मृत्यु का पंजीकरण डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हो रहा है. अब ये बिल अमेंडमेंट होके ये बिल पास होने पर जो बच्चे पैदा होंगे, मैं तो बोलूंगी कि वो सारे बच्चे इतने खुशनसीब होंगे कि उनका सारा जो जन्म का रजिस्ट्रेशन होगा वो सारे ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन
So 102 votes against the Delhi Services Bill, 131 in favor. I want to cut across to India Today's Aishwarya Paliwal for more on this. Aishwarya, the government was in no doubt about it. The Union Home Minister Amit Shah on the floor of the Rajya Sabha had made it very clear whether it's the no confidence movement or a discussion on Manipur that is open to the idea on the 11th, or here the government was very clear. It had the numbers. Well, that exactly is something that the Bharatiya Janata Party and the central government had been time and again speaking about the fact. A very emotive speech there, Gaurav, being made by the Home Minister of the country, Amit Shah, clearly pointing towards the fact that they knew exactly what the outcome will be. Now, the big question, Gaurav, is will the Aam Aadmi Party stay in the India alliance? Because, you know, for over the past 3 to 4 days, there has been a buzz that there is a possibility that, you know, the Aam Aadmi Party might just walk out, and also the way in which they arm twisted the Congress Party into making sure that the Congress Party was on board with them is something that we will have to see over the next few days. You know, we are all now waiting for Arvind Kejriwal's press conference that will begin shortly. But yes, one thing that this has done is that it has given a boost to the Bharatiya Janata Party, to Home Minister Amit Shah, and also given a boost to the central government, because this definitely is paving the way for the big 2024 elections. Gaurav. And again, on opposition coming together, there was a barb from the Union Home Minister Amit Shah. He said, what is this talk about this principled alliance or Siddhanto ki ladai, where the opposition claims to have come together? The Aam Aadmi Party and the Congress have been at loggerheads. In fact, there was a barb that was aimed at Mallikarjun Kharge from the Home Minister, where he said the Aam Aadmi Party is not targeting us. The Aam Aadmi Party is actually targeting the Congress, trying to ensure that the Congress is wiped out first in Delhi, then in Punjab, which brings us to that point. Are the Aam Aadmi Party and the Congress together in the opposition alliance called India? Well, a big question there, Gaurav, something that everyone, and especially the Bharatiya Janata Party, will be keeping a very close eye, because from day one, from the first meeting that took place in Patna, this is what the BJP and the top leaders, especially Prime Minister Narendra Modi, because he's been taking pot shots at India and saying that this is just a coalition of those who are extremely corrupt. If you would have noticed over the past many rallies that Prime Minister has done, he's been speaking about the fact that these are parties that only want to make sure that they rise. These are the parties that want to make sure that they earn a lot of money. So Prime Minister very clearly speaking about the fact that this is just a coalition of the corrupt, and today by passing the bill in the upper house, very clearly the Bharatiya Janata Party has set the move. The ball is now rolling, Gaurav, for the big 2024 elections. What will happen to India? We will now have to wait and watch, and all the eyes now on the press conference of Arvind Kejriwal, because Arvind Kejriwal time and again has been speaking about the fact that they were very sure that they wanted all the parties together and all of them standing together, but the numbers did not stack up in their favor. What will happen to India? We'll have to wait and watch. So this bill now goes to the president. It's a setback as far as the opposition alliance is concerned, but there's another aspect. Now, there was a proposal that was moved to send this to the select committee. Even here, several MPs, including Sudhanshu Trivedi, say they never signed that this should be sent to the select committee, and the Home Minister says this is a breach of privilege and should be taken up. Now, this again would raise serious questions about how the opposition was actually galvanizing its numbers or its strength for this bill, Aishwarya. Well, definitely, you know, numbers are being, a lot of questions at the moment are being raised. We'll get more clarity, but the fact of the matter is, you know, if we just look at data, it is 102 versus 131. So here also we see that the actual numbers are with the Bharatiya Janata Party. So definitely, you know, no two ways in which the BJP in fact knew what exactly would take place. A big setback for Arvind Kejriwal, for the Aam Aadmi Party. What the BJP, Gaurav, has been speaking about in Delhi, it is Congress versus Aam Aadmi Party. In West Bengal, it is TMC versus Congress. So these are the questions that the BJP, Home Minister Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi has been raising time and again, saying, what is the common thread that brings all of you together? This actually will be the litmus test for India. The next meeting, from what we understand, Gaurav, will take place in Mumbai, in Maharashtra. How many leaders will actually turn up, and will they actually look at the numbers, Aishwarya? Look at the difference between the numbers that the government has and the numbers that the opposition was able to get. 131 in favor of the government, only 102
against this bill. But before I get you more on this, and Aishwarya, stay with me, let's quickly cut across and listen in to the Home Minister's spirited defense and response to the charges laid by the opposition. Let's listen in to Amit Shah. एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है मान्यवर। मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे जो अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है, अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव
सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो, तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है, मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं। इसीलिए 3 बार 4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, तभी 4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे।
एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली। आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की। जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's big attack on the Bharatiya Janata Party. He said the BJP government had stabbed the people of Delhi in the back. In 2014, Prime Minister Narendra Modi, then aspiring to be Prime Minister of India, had promised Delhi full statehood. On the other hand, excuse me, full statehood was not given. Delhi's powers have been taken away. I quickly want to cut across to India Today's National Affairs editor Rahul Srivastav joining us for more on this. Rahul, we heard what Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said, but before that, look at how the numbers are stacked up. 131 in favor, 102 against. What does this say about the opposition alliance, India taking on the NDA? That the idea of united opposition to take on the BJP in future is getting tested. One test today, and in another 2-3 days there's going to be another test as the no confidence motion going to get taken up in the Lok Sabha. Now, if you see the numbers, till evening, the numbers which we were likely to, the government was likely to get was 125 odd. But by getting 130, more than 130 votes, and the opposition numbers slipping below 110, the indication is that the some votes that the Aam Aadmi Party was counting on will come to its kitty have actually gone to, that is, for the bill. Now, eventually, what it indicates that there is still a lot as the opposition ranks are concerned. Now, in that, if Arvind Kejriwal had tried to make it a federal issue, that the fires which have reached Delhi today will reach other states also, perhaps that has not been very convincing. And it seems other parties realize that Delhi is different from other states. And if you see another point that was raised by the Union Home Minister was when he told Mallikarjun Kharge, the Aam Aadmi Party is not targeting me, the Aam Aadmi Party is actually targeting you. The Congress, their entire politics is about being anti-Congress, whether in Delhi or in Punjab. Is this just to
create more fissures in the opposition rank, or is there merit that there are major fissures in the opposition rank, and even a bill like the Delhi Services Bill did not paper over those differences? No, Rahul, the your audio is bad, but I gather that you're asking me that are there very serious fissures in the Yes, go on, sir. Partially, but I think you're asking me that these fissures about the fissures. Yes, Amit Shah used his reply to the bill as far as the debate is concerned. Try to use it effectively to drive that wedge. One, he said that all the rules which have largely come about, the Congress had created them. And now the Congress is siding with Arvind Kejriwal, who was still now attacking the Congress party. In fact, there was a very interesting comment quipped by the Home Minister when he said that a few tons of abuses were hurled at the Congress party and various opposition leaders were called names. And then he stated also, warned Mallikarjun Kharge, that just let the bill pass and Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party will be out attacking the Congress, because he knows that in Rajya Pradesh, the Aam Aadmi Party is trying to make forays. So the idea behind the whole debate eventually materialized an attempt of test of strength as far as the two formations are concerned now, the NDA versus India. And it seems that India as a whole entity within their own interpersonals between them, the relations between them, and the relationship between the opposition groupings, India and the rest, they need a sincere amount of work. Why I say that, Gaurav, that the Delhi ordinance bill, and in sometime in the winter session, the government is planning to bring something as critical, is likely to bring something as critical as a uniform civil code. And if there is opposition disunity in this intervening period till the next elections, it will be very difficult for the opposition to sell a unity story to challenge the NDA. But Rahul, how will the opposition be able to sell that unity story when the opposition is taking on each other in multiple states? They're only united in targeting the Narendra Modi government or the BJP. Otherwise, in states, they're fighting. So how will they be able to sell the story? The Home Minister also referred to it, whether he was talking about the Trinamool Congress, the left, the Congress in Bengal, or the Aam Aadmi Party and the Congress in Delhi and in Punjab. What happens next in a state like Rajasthan, for example? Yes, that's two meeting the opposition, which eventually led to the formation of India with 26 led by the Congress, has given one very clear impression that there are some troubled states where unity will be difficult and components of India will be contesting against each other. But beyond that, the idea is not really seat sharing or having a united face, prime ministerial candidate or any other. These are ticklish issues which can create division. And that is why this coalition is not getting into it. And the whole idea now of this India is to create a large nationwide footprint of perception against Narendra Modi and the BJP. Beyond that, this coalition is not of a great significance in terms that if you think it is a classic coalitions in which there will be seat sharing of a leader who will be leading all of them, I think those are difficult issues. They know that these are issues which will divide the coalition. So for a unity index, high unity index, the idea is to restrict India only till as far as creating a nationwide footprint of narrative against Narendra Modi is concerned. Okay. Now, as far as that narrative is concerned, Rahul, before I let you go, as far as that narrative is concerned, on Manipur, will the opposition be able to do that in Parliament, especially at a time when the Union Home Minister said, fine, you want to debate, you want debate and numbers, we can do it today in the Delhi Ordinance Bill, we can do it on Manipur on the 11th. That was the challenge to Mallikarjun Kharge. So
after the no confidence motion, do we actually see a debate on Manipur on Friday, Rahul? Gaurav, yes, the government has been open to the idea of a debate. But I think eventually the idea of a debate is not the core of the whole disruption or the opposition move. It wants the Prime Minister to speak up, because once the Prime Minister speak up, they feel that they will have tangibly something against the Prime Minister to paint him as somebody who has failed. The idea is not to make the government come out with answers, because if they had, then Amit Shah would have been the most appropriate and suitable person to be replying a debate on the Manipur issue, because remember, the Home Ministry is the nodal agency between the center and the states. The idea is to make the Prime Minister speak and then build a narrative from there. And that is why, Gaurav, I'll tell the viewers a very interesting thing. This is the 20th no confidence motion in the history of this country. The first one was largely targeted at Jawaharlal Nehru government and its failure on China in 1963. But still, it was not targeted at a Prime Minister making him to speak. This no confidence motion has a unique distinction on trying to make the Prime Minister speak on an issue, and the opposition will come united to build a perception on Manipur. Interestingly, Rahul Gandhi, reinstated as a member of parliament after his supreme relief in the Supreme Court, might be leading a charge, and that might form the core of what the opposition may be doing in future. Fair enough. That happens at 12 noon, and we'll be tracking that story very, very closely.